concept of the Biohacker. Welcome, Anna. Thank you so much for joining us. All right, can we please have the AV, please? Give yourselves a big round of applause. Give yourselves a big round of applause. Once again, my name is Glenn Saldana. Thank you, members of the press, media, for joining us over here today. I couldn't biohack, but I hacked into your happiness for 5 seconds at least. Just to tell you that it's very, very simple. जो हम बाहर aesthetically ढूंढते हैं, everything is within us. तो ये biohacking की technology है क्या वैसे भी? You know, we know about creams, we know about magic potions that लोगों को promise करते हैं कि aesthetically आपको बाहर से beautify करेंगे. But the beauty is, बचपन से सिखाया गया है यार, पूर्वजों ने कहा है अंदर झांक कर देखो सब पता चलेगा. And that is what we are going to do today with biohacking and this technology. Now the most beautiful part is this gentleman that I'm going to introduce right now on stage is the man I've seen working out in the gym below. ये जिम के ओनर हैं, Biohacker ये जो कंपनी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इनके करता धरता है, and he leads with example. This man, I don't know how he reverse ages, what he does, what is his secret recipe, क्या खाते हैं, क्या करते हैं. Let me first up bring on stage the man behind the Biohacker, Mr. Lalit Dharmani. Please come on stage, sir. Thank you very much. Mr. Yogiraj, could you please come on stage with a small token of appreciation on behalf of the Biohacker. Thank you so much. All right, next up is somebody I consider the OG action star in our industry. Now let me put it this way. This Balwan is सबके दिल की धड़कन. All right, his charisma and style goes beyond the border. और सब इसी हेरा फेरी में लगे हुए हैं कि बॉस इनके स्टाइल और स्वैग का राज क्या है. सब दीवाने हुए पागल इनको देखकर. When it comes to style, swag and working on himself, he says मैं हूं ना. He did a film called Aan Men at Work, but I'll tell you what, Anna is always at work. Ladies and gentlemen, the man, the OG action star of India, Mr. Suniel Shetty. Give him a big round of applause, please. Thank you very much, sir. We're going to have a small Q&A session, a few questions Biohacker ke regarding. और उसके बाद I'll open the question and answer sessions from the press. So ladies and gentlemen, we're going to just do this right now. You can have your photo op. There'll be another photo op opportunity. We'll be doing it once again, but we'll start. Could we please have the mics? All right, I'm going to now take this question answer session, but ये थोड़ा सा examination जैसा होगा, Mr. Dharmani. Anna, this is good. So biohacking is Sorry? start. All right, please. So biohacking is basically जो हम art and science of changing the environment, हमारा बाहर का और अंदर का environment और बायोलॉजिकल चेंज लाने के लिए इसको बोलते हैं बायोहैकिंग. सिंपल तरीका है ये अपने आप पर काम करने का. दैट्स कॉल्ड बायोहैकिंग. राइट राइट. सो जितना हम अंदर देख पाएंगे, जो हमने पहले भी बताया है कि वी हैव टू व्यू इनसाइड क्या प्रॉब्लम्स है हमारे एंड देन वर्क ऑन इट. दैट्स कॉल्ड बायोहैकिंग. डू इट योरसेल्फ. दूसरा कोई नहीं, हमें खुद करना है. दैट्स कॉल्ड बायोहैकिंग. बचपन में इनको बहुत बोला गया अपने गिरेबान में झांक कर देखो. और इसीलिए आज तक हैकिंग के बारे में सुना. बायोहैकिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. So we are going to get to know more about biohacking, but Anna, I want to ask you one very legit, honest question.
You have discovered biohacking before biohacking came. You just went on to this. For you, fitness and good looks have been synonymous, working together. How have you managed? What has been that one thing that you have followed religiously? I think a consistent lifestyle. Anything that the world believes gave them a high is something I didn't believe gave me a high. Whether it was alcohol, whether it was tobacco, whether it was aerated drinks or anything unhealthy. For me, everything was about me feeling good, preventive wellness, staying away from medicine, staying away from things, and enjoying the simple things in life. Nature, sport, team sport, relationship, friendship. This is all biohacking. According to me, this is all biohacking, and that's how it's coming back to you. कि अपने आप को सुधारो. जब हम बोलते हैं कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, उनके कंधे पे इतने बुक्स और शोल्डर्स पे इतने बुक्स मत डालो. दैट इज़ बायोहैकिंग अकॉर्डिंग टू मी. ताकि बच्चे अपने एनवायरनमेंट में बड़े हो, और जब अपने एनवायरनमेंट और अपने दोस्तों के साथ और खुशियों के साथ बढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं शुरुआत है बायोहैकिंग की. तो शुरुआत वहाँ से होती है. एनवायरनमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ऑफ कोर्स इसको अभी एक नया फॉर्म दिया गया है. इंटरनल इश्यूज को समझने का. Science has got involved to tell you about it, right. How to improve it, how to detox your body. Right. I think biohacking अगर कहीं शुरू हुआ तो इंडिया में शुरू हुआ होगा. Wow, very well said, very well put. योग हो, आयुर्वेद हो, हमारे religions हो, हमारा culture हो, हमारी diversity हो, it is India. India is the epicenter of anything and everything good, and biohacking is one of that. And I'm glad that Lalit jumped into it, and I got an opportunity to jump in right with him. We will come to a very important question that I want to ask you, but Mr. Dharmani, I have to ask you this. हर company का एक vision होता है. Now, with the biohacker, like Anna mentioned, it is internal. The change has to be inward, and then वो output outward दिखेगा. Generally हम क्या करते हैं? Outward to inward change लाने की कोशिश करते हैं. So, what is your vision with this concept? क्या है आपका vision? So basically, मैंने खुद करके देखा है. आई हैव जस्ट वर्कड ऑन माई सेल्फ सिंस लास्ट 5 years, एंड आई हैव सीन दैट कि आई कैन रियली चेंज माई बायोलॉजी विच इज़ गोइंग टू हैम्पर इन फ्यूचर, बिकॉज द थिंग्स कि सिचुएशंस तो आएगी, एवरीथिंग विल कम विच विल डिटीरिएट आवर हेल्थ. सो ऑन दैट पार्ट ऑफ इट आई टुक अ चार्ज ऑफ माई सेल्फ, एंड आई थॉट कि लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. किसी को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, नॉट नेसेसरी टू एनी पर्टिकुलर ट्राइब, बट एन ईच एंड एवरी पर्सन कैन लुक इनटू इनसाइड देयर एंड चेंज द बायोलॉजी. Well, I think that's so important because generally हम quick fixes or solutions ढूंढते हैं. What is this? A 3-month body, or let's just fix this temporarily for a vacation or for a शादी है घर में तो मैं उसे change करना चाहता हूँ. Not like what you all both are mentioning is long term. It's a process. It is not a destination. एक journey सी है. So I want to ask you, a lot of actors and stars invest in supplements in gyms and all, which is a legit thing because if you're into the fitness fraternity. लेकिन आपके लिए एक बहुत ही हटके investment है when it comes to the biohacker, and you've also happened to mention that it's one of the wisest investments you've made. Could you throw some light on that? Yeah, and we have a plan for it. I'm excited that somebody's taken the lead. देखिए हमेशा होता है कि एक्टर करना सबको चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग. जब तक मैनेजमेंट सही नहीं हो और एक एक्सपर्ट उस चीज़ में नहीं हो, आप अपनी एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज उनको दे सकते हैं, लेकिन फिजिकली चलाना उनका काम है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर जब मैं ललित से मिला, आई नो ललित फॉर अ लॉन्ग टाइम, और 5 साल से जब इस पे वो वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी जर्नी भी यही रही है. लोग आज बात कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, लेकिन आज साइंस के जुड़ने से it is proof that you can take care of your internal systems by just being yourself, by just doing the simple things, staying away from allopathy. तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शुरुआत है. आई मीन आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट, आई वॉन्ट टू डीप डाइव इन टू इट, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा चाहा कि कुछ वापस दूँ. आई थिंक दिस health is something that I can give back. So the idea is कि ये एक क्लिनिक है, मैं मानता हूँ ये हमारी बायो हैकिंग की क्लिनिक है.
बायो हैकिंग का एक सेंटर होगा और फिर बायो हैकिंग की एक डेस्टिनेशन होगी. मैंने कभी अपने प्लान्स के बारे में बात नहीं किया हूँ क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव पहले डिलीवर करते हैं, चली तो फिर बात करते हैं. लेकिन यहाँ our plans are ready. Probably the next one would be a 15,000 square feet setup. Wow. Because biohacking is not just about machines, it's about mental fitness, about creating the atmosphere, creating nature around you. क्योंकि जब वो डोपामिन बाहर निकलता है खुशी की, हैप्पी डोपामिन जो आपने सुबह कहा, उससे सब बदलाव आता है. Right. You know, मेरे लिए तो एक बच्चे को भी अगर मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप ड्रिबलिंग सिखाओ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा. जो आप अभी ढूंढ रहे थे कि यार मैं समझता हूँ आप में ये नहीं है, लेकिन वहाँ से शुरू होता है. बच्चा बॉल ऐसे पकड़ लेता है और उसमें कॉन्फिडेंस उतनी बढ़ती है ना कि ढूंढता है बॉल के लिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए. एंड यू कैन बी अ बायो हैकर योरसेल्फ. तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंटर्स नहीं होंगे, लेकिन वो नॉलेज भी दिया जाएगा. सिर्फ उनके लिए नहीं जो हमारे सेंटर्स में आएंगे, लेकिन through the medium of social media and everything, जो यहाँ नहीं भी आ सकते, they should gain for it. So there are big plans and this is my ultimate dream कि एक 10-15 एकड़ का एक सेटअप हो जहाँ वो बायोहैकिंग सेंटर हो, जहाँ लोग जाके कुछ दिनों को लेके अपने आप को बदल सके. The beauty is that both of you all are leading with example in the sense you all want to bring about a change. That's the ultimate motive. So you were saying something. So also biohacking is also an use of science and technology wherein we try to work on ourselves. Similarly, there's a science between me and Suniel sir. Science is God's willing to be together and create a platform for each and every person in India to experience these services. Right. So that's the main science, the God's science, is that we both are together. That's very and without him, I don't think so I'll be able to achieve. But then he's got the motivation behind, you know, he just pushed me every now I meet him and said कि क्या कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है. So that's what we have been working on it since almost 3-4 years down the line, and today we are here sitting together on this platform and giving it to the public. But it also intrigues me, not just in capacity of a host, but genuinely I'm asking this question on behalf of everybody. We're all in the media and press, we all have crazy hours of working. And as Gen Zs and millennials, I come from a millennial generation where one common problem I've heard, I am into fitness, so I play sports, so I know I've lived an active life. But I know a couple of my friends would always say, यार थक गए. मैं बोला क्या किया तुमने? बोला कुछ नहीं यार, पता नहीं, बस थक गए. This is a common problem that we all face all the time. यार थक गए बिना कुछ काम किए. And I think वो कहीं ना कहीं मेंटल थकान है जी. मेंटली आप थके हुए हो इसीलिए आप. लेकिन अगर आप एक रूटीन डालोगे अपनी जिंदगी में, रूटीन कोई कुछ भी हो, आप ब्रश करते हो, सुबह उठ के नहाते ही हो, तो वैसे ही आप रूटीन डाल दीजिए, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है. एंड गेट इनटू अ स्पेस वेयर यू आर हैप्पी. आई मीन मैंने आई थिंक 8-10 साल पहले ही छोड़ दिया था कि यार फ्राइडे वाइडे आता रहेगा, यू नो इट्स नॉट वर्थ क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट. 100 फिल्में तो कर ली मैंने, 10 फिल्में करके लोग घर चले गए, मैं क्यों नाराज़ हूँ. एंड आई थिंक दैट मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चेंज्ड एवरीथिंग मी. कोई मुझे दुख पहुँचाता है तो मुझे पहले हफ्ते भर 10 दिन मुझे बहुत ख़राब लगता था. उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो 10 दिन का है, अगर मैं इस वक्त को कम कर दूँ फिर क्या होगा. कम होते गया और आज ऐसा वक्त है कि बुरा लगता है, उसके बाद मैं सोचता हूँ ठीक है यार कल ख़त्म हो जाएगा, एंड ख़त्म होता ही है. तो आई थिंक वी नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, वरना साइंस या कुछ भी काम नहीं करेगा. You biohacked. Yeah, you biohack that mind of yours to tell him कि be there and focus on the good things. यार अगर मुझे आप में मुझे अगर बुराइयाँ दिखाई देगी तो मैं अच्छाइयाँ कुछ लेकर ही नहीं जाऊँगा. तो लेकिन अगर अच्छाई दिखाई दे तो मुझे सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है. एंड दैट्स हाउ. गलतियाँ मुझसे बहुत हुई है मेरे एज पे, मैंने बहुत सारी चीज़ें की होगी जो गलत होगा, लेकिन उस गलत से सीख कर मैं यहाँ पहुँचा हूँ. एंड आई थिंक इफ़ आई कैन इम्पार्ट दैट नॉलेज टू पीपल कि बी हैप्पी, मेक फ्रेंड्स, आई थिंक एवरीथिंग फॉल्स इनटू फ्रेंड. इसलिए ग्रुप्स, फ्रेंड्स, ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, वो एम्बियंस को देखना बहुत ज़रूरी है. वो 3 साल पैंडेमिक से जो अब हम गुजरे जी, तो कभी कभार तो ऐसे लगता था कि एक दूसरे की जान ले लेंगे घर में. यू नो इट्स बिकॉज ऑफ द मोनोटनी. वो मोनोटनी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. I think a sense of community, and that's what you're trying to also build with the biohacker, like a sense of community where people can understand, Mr. Dharmani, ki internally how can you optimize your performance, how can you learn certain things about your body, जो बहुत essential है.
And today's day and age, I think every Gen Z, millennial, and every adult wants to optimize their performance at work, wants to be at their best and ensure that there's balance between health, money, and everything else. So can Biohacker help us with all of those, get our answers? Yeah, so the Biohacker is a facility or a center or maybe a clinic as per what we have described here. So it's there a platform for each and everyone to come and experience the therapies, how to enhance our performance, how to enhance our cognitive health. दिमाग का जो हम सोचते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी नहीं है, सो वी एबल टू गिव यू द नेचुरल enhancement जो आपका cognitive health strong करेगा, and you able to bear the stress, bear the situations. That is where we work. We have the entire facilities wherein we have number of facilities and number of services